8.4 now exercise 8.4 question number 5 to that and question number 5 तो कल हम लोग से नहीं हुआ था that is cos a minus mute yourself Jaya cos a plus sin a minus 1 is equal to cosec a plus cot a. This is the question. We try yesterday, but कहीं पे तो गड़बड़ था. So again, same. We have to take LHS. Cos a minus sin a plus 1 upon cos a plus sin a. So another side we want cosec and cot. We want cosec and cot. Cosec का भी आता है 1 upon sin cosec. Cot का भी आएगा cos upon sin. So if you observe carefully यहाँ पे ये cos के नीचे मैं sin डालूंगा this become cot. Sin के नीचे sin then it become 1. इसके नीचे sin डालूंगा it become cosec. So we have to divide each and every term of numerator and denominator by sin. So sin से divide करें. So cos a minus upon sin a minus sin a upon sin a plus 1 upon sin a. Same in the denominator also. Cos a upon sin a plus sin a upon sin a minus 1 upon sin a. Just write dividing by sin. So cos upon sin become cot. Sin a cancel, this become minus 1 plus 1 upon sin become cosec. Same here, cos upon sin become cot plus this cancel 1 plus minus 1 upon cosec. Okay. Now we don't want 1 चाहिए नहीं 1 को साइड में डालें कैंसिल नहीं होगा. अच्छा ये रॉन्ग किया cosec अप साइड हो गया 1 को साइड में डालते हैं दोनों को बाजू बाजू में लेते हैं cot a cosec plus f plus cosec a minus 1 and here also cot a minus cosec a plus 1. कुछ नहीं किया. Now in the place of 1 we have identity of cot and cosec. क्या identity cot and cosec की? cot and cosec की identity क्या है? बोलो ढूंढो. हर चीज नहीं बताऊंगा मैं. ढूंढो. मैंने हर एक चीज दी हुई है. If you not learn the formula तो कोई यूज नहीं है ट्रिग्नोमेट्री का. Cot square a plus 1 is equal to cosec square a and then 1 is equal to उधर देखना नीचे. अरे दिया था मैंने. I derived the formula and I told you to you have to write the formulas. Shaurya. Yes sir. Cot and cosec identity. सर याद नहीं. टेक्स्टबुक नोटबुक होगी ना. नोटबुक में लिखा है. वाह रे वाह. cot a plus cosec a minus 1 plus cot था. झापड़ बजानी चाहिए तुम लोगों को. cot square a is equal to cosec. तो shift this cot that side. सिंपल उसने तो सब बताया था. उसका थोड़ा दिमाग लगा लेते तुम लोग. ये काम हो जाता. 1 plus cot है कि 1 plus cosec है? 1 plus cosec है ना. तो तूने तो cot बोला. क्या है फॉर्मूला? cot square a plus 1 equal to cosec square. हाँ cot square a plus 1 ना. 1 plus cot square a is equal to cosec square. वाह वाह. 1 plus cot square. Cot that side ना. 1 is equal to cosec minus cot.
यही है ना? Then in the place of 1, just write that one. Cosec square A minus cot square A. Denominator as it is. Cot A minus cosec A plus 1. Just that, write that reason. The reason लिख लेना. 1 plus cot square A is equal to cosec square A minus 1. ये माइनस ही है ना? -1 की जगह वैल्यू डाली ना? 1 की वैल्यू है नहीं है, तो 1 की जगह पे लिखा ना मैंने, सही है? नहीं लिखने का उधर, एक ही जगह डालना है. Then numerator in this bracket, this is a plus b a minus b. तो आइडेंटिटी यूज करो. cot a plus cosec a minus cosec a plus cot a, cosec a minus cot a, cosec a plus cot a and cosec a minus cot a. Numerator, denominator as it is, cot a minus cosec a plus 2. See numerator either side of minus sign. This bracket is same. Take common. Cot a plus cosec a. Bracket common आता है. यानी यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है. 1 minus. Then if you open the bracket, both the sign change. ये हो जाएगा minus cosec. And this become plus. And denominator cot a minus cosec a plus 1. Cosec minus 1 plus 1 plus cot plus दोनों cancel. You have cot a plus cosec a. हो गया प्रूफ? cosec a plus cot a या cot a plus cosec a same equal to RHS. Therefore RHS equal to RHS. Solve. So question is sin a plus cosec a whole bracket square and sin a plus cos a whole bracket square is equal to 7 plus tan square a plus cot square a. So simple question. Sin a plus cosec a square plus cos a plus sec a whole bracket square. So students यहाँ पे हमें यूज करना है आइडेंटिटी a plus b whole bracket square. So a square plus 2ab plus b square. So this become sin square a plus 2 sin a cosec a plus cosec square a. And this one cos square a plus 2 cos a sec a and then sec square a. We use the identity कौन सी यूज की? a plus b whole bracket square is equal to a square plus 2ab plus b square. So sin square a cos square a 1 होता है. पर देखो कुछ नहीं है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं मार रहा है इधर का. तो sin square a plus cos square a इसको बाजू-बाजू में. दिस है ना, दिस 2 sin a. We know that मैंने तुम लोग को लिखा था sin a is equal to 1 upon cosec a and cosec a is equal to 1 upon sin a और दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों कैंसिल होकर आंसर 1 आता है. So sin a into cosec a 1 होता है. अदरवाइज तुम लोग यहाँ पे कर दो 1 upon sin a in the place of cosec. नेक्स्ट है cosec as it is रहने. cosec होता है, अभी दिया था तुम लोग ने, cosec square a is equal to 1 plus cot a. In the place of cosec just write 1 plus cot square a plus 2 cos a. sec means again 1 upon cos and sec की वैल्यू क्या है? 1 plus tan square a. sec square a is equal to 1 plus tan square a. So this is cancel, this is cancel. sin square a cos square a become 1 plus यहाँ पे कितना बचा 2
plus 1 plus cot square A plus 2 plus 1 plus tan square A. So 1, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 plus cot square A plus tan square A. Equal to RHS. Therefore LHS equal to RHS. तो सब आइडेंटिटीज का कमाल है. So this is LHS cosec A minus sin A and sec A minus cos A. We have the identity cosec means 1 upon sin. Cosec means 1 upon sin, so 1 upon sin A minus sin A. And sec means 1 upon cos minus cos A. Now do the LCM. Sin into sin. Sin square. Sin square 1 minus sin square upon sin. And here cos into cos square upon cos A. 1 minus sin square A cos square A होता है. We have identity into 1 minus cos क्या होता है sin square A. कौन सी आइडेंटिटी यूज की हम लोग ने 1 minus cos square A sin square A plus cos square A equal to 1. ये आइडेंटिटी मेन है, इसको हम लोग ने कन्वर्ट डिराइव करके दोनों किया. Now cos square and cos cancel, sin is cancel. We have cos A into sin. ठीक है. तो ठीक है, इसको इधर ही रहने दो. हमें प्लस चाहिए तो वो ले लो अभी. नाउ टेक आरएचएस. कभी कभी दोनों सॉल्व करने पड़ते हैं. 1 अपॉन tan A plus cot A. So 1 upon tan की वैल्यू क्या है sin A upon cos A plus this one is the cos A upon sin. ठीक है. Now this plus sign तो डिनोमिनेटर में पहले एलसीएम करना पड़ेगा. So 1 as it is है. Sin into sin square plus cos into cos square. So sin square A plus cos square A upon sin A cos A. Now take the reciprocal 1 upon sin square A cos square A 1 होता है upon sin A cos A. So this goes upside 1 into इसका reciprocal sin A cos A upon 1. Your answer is sin A cos A. Now see the LHS cos A sin A, RHS cos A sin A. Therefore, LHS is equal to RHS. Some sort. So take LHS first. 1 plus tan square A upon 1 plus cot square A, right? So 1 plus tan square A, we know it is sec square A. Sec square A. And 1 plus cot cosec square A. So sec होता है sec is equal to 1 upon cos. So whenever sec goes at denominator में sec क्या होगा cos होगा. And cosec ऊपर जाके क्या होगा sin हो गया. तो sin square A cos square A होता है tan square A. करेक्ट. तो ये हो गया फर्स्ट. सेकंड मिडिल टर्म लेते हैं. 1 minus tan A and 1 plus tan A whole bracket square. So A minus B whole bracket square and A plus B square minus cot. 1 minus cot teacher 1 minus cot है. Okay. 1 plus minus cot tan A 1 minus cot A whole bracket.
So a minus b whole bracket square get introduced here. So a square minus 2ab and then b square. Again, a square minus 2ab plus b square. So this is a minus b whole bracket square is equal to a square minus 2ab plus b square. We use this analysis. So 1 plus tan square every year ना 1 plus tan is equal to 6. ठीक है 1 plus tan square है 6 square है. इतना नहीं करते हैं सिर्फ थोड़ा सिंपल कर लेते हैं 1 minus tan की वैल्यू है sin upon cos and this 1 minus cot is equal to cos a upon sin. Now first LCM. LCM का नाम cos a this side cos a minus sin a upon cos a denominator sin a minus cos a upon sin a whole bracket square. Now reciprocal करते हैं cos a minus sin a upon cos a and into sin a upon sin a minus cos a. One to whole bracket square. Now whole bracket square है cos a minus sin a minus cos a. यहाँ पे sin माइनस है यहाँ पे cos माइनस है बट फर्क कुछ भी नहीं पड़ने वाला क्यों बिकॉज अगर तुम लोग a माइनस b होल ब्रैकेट स्क्वायर करते हो तो आता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर एंड इफ यू डू b माइनस a होल ब्रैकेट स्क्वायर then it is the b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर फर्स्ट एंड लास्ट पॉजिटिव ही आने वाला है तो यहाँ पे sin एंड cos स्क्वायर पॉजिटिव आने वाला है मिडल -2 sin a cos a -2 sin a cos a so therefore these both cancel so we have sin a upon cos a whole bracket square so that is tan square a tan a and the bracket square means tan square a so this one is the left hand side tan square a middle term tan square a and right hand already tan square a therefore LHS is equal to middle term is equal to R. Sum solved chapter also completed.